and 3 upon 4. And if it is asked to prove that for the theoretical question that log of 5 to the base 10 is less than 3 upon 4. Now sometimes if the question is asked to prove that this is the order relation, it means that we have to prove that 3 upon 5 is less than log of 5 to the base 10 and log of 5 to the base 10 is less than 3 upon 4. These two are different. Now first let us concentrate on this, that 3 upon 5 is less than log of 5 to the base 10. Now to prove that, when you have to prove that 3 upon 5 is less than log of 5 to the base 10. See, a very simple thing is that when uh, when you have to prove this, that is you must prove, that is to prove. The proof is indirect proof. When you have to prove this, you must to prove that 3 is less than 5 into log of 5 to the base 10. If this is, then this will be proved, and if it is proved, then it will be proved, and then you will have this. So we have to prove that 3 is less than 5 log 5 to the base 10. Now we come to the point that we have to prove that 3 is less than log of 5 to the base 10 into 5. So we have to prove 3 is less than, we have to prove that 3 is less than 5 into log of 5 to the base 10. That is 3 is less than log of 5 raised to 5 to the base 10. That we have to prove that when you have to prove anything, you have to prove something. That we have to prove that, see here, 3 is less than log of 5 raised to 5 to the base 10. What is value of 5 raised to 5? 3 is less than 5 raised to 5, 5 cube 125, 5 raised to 4 and 5 raised to 5. What is the value of 5 raised to 5? 125 into 25. Anybody? So 3 is less than log of, what is the value of 5 raised to 5? 5 raised to 4, 625, 3125. Log of 3125 to the base 10. And we will verify whether this is true or not. अगर ये true होगा तो ये true होगा, ये true होगा, मतलब ये true होगा, log of 5 to the base 10, and we will prove, we have proved it, we can say. So whether 3 is less than log of 3125 to the base 10, whether 3 is less than log of 31 to the 5 to the base 10. Now in 3, if we adjust the term 3 matlab 3 into 1, we can write 1 as a log of 10 to the base 10. No change in the step. That is log of 3125 to the base 10. No change in the step. 1 is replaced as a log of 10 to the base. That 3 will be, so log of 10 cube to the base 10 is less than log of 3125 to the base 10. And observe that log of a to the base 10, log of b to the base 10. We have to prove this. Whether we can prove this? Yes, we can prove that these two are less. This, there is a order relation between these two, that this one is less than this one. Q 10 cube is less than 3125. Verify. 10 cube is less than 3125. So yes, that is to prove that 10 cube is less than 3125. Is it less? Yes. 10 cube matlab 1000 is less than 3125. Matlab you have to prove something, you must know something. Here it is a reverse process of proof. Means this is true when this is true, when this is true, when this is true, and when this is true, and this is true when this is true, and it is true that 10 cube is less than 3125. 10 cube matlab 1000 is less than 3125 means one part of this is proved. Now the second part similar to this. What is the second part?
we have to prove that what the second part is, what very important part is that log of 5 to the base 10 is less than 3 upon 4. Log of 5 to the base 10 is less than 3 upon 4. That is to prove that 4 into log of 5 to the base 10 is less than 3. That is to prove that log of 5 raised to 4 to the base 10 is less than 3. That is to prove that no change in the step, nothing to prove. It is always, it is less than 3 matlab 3. 3 into 1 will be what? Log of 10 to the base 10. Now 3 into log of 10 to the base 10, log of 5 raised to 4 to the base 10. What is the value of log of 5 to 5 raised to 4 to the base 10? 5 raised to 4 is 625. Log of 625 to the base 10 is less than log of 3 log 10 to the base 10, matlab log of 10 cube to the base 10. Now it is to prove that, means this to prove that, that is whether it is proved. Yes, log of 625 to the base 10 is log of 1000 to the base 10. Whether 625 is less than 1000? Yes, 625 is less than 1000. Log of 625 to the base 10 is, yes, is less than log of 1000 to the base 10. That is log of 625 to the base 10 is less than log of 10 cube to the base 10. रिवर्स प्रोसेस होती है. To prove this and this, ये है इसलिए यह है. So log of 5 raised to 4 to the base 10 and so on, so on, so on. But we will prove that it is proved, hence this must be proved. It is called the reverse process of the proof. And now see here what we proved. We proved that we proved that 3 upon 5 is less than log of 5 to the base 10 is less than 3 upon 4. How we proved that 3 upon 5 is less than this and log of 5 to the base 10 is less than 3 upon 4. We proved this and also this one. Three upon 5 is less than log of 5 to the base 10 and log of 5 to the base 10 is less than log of 3 to log of 5 to the base 10 is less than 3. Hence both are the inequality is proved. And we have so many inequalities to prove. When any inequality is proved, we have to prove both the part of both the sides of both the part. A is less than B is less than C, must prove that A is less than B and B is less than C, then you will get this inequality. Again, I have some more problems to understand the inequality. How to prove the inequality? I have one problem that 1 upon 4 is less than log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. It is our question. 1 upon 4 is less than log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. 1 upon 4 is less than log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. 1 upon 4 is less than log of 2 to the base 10. That is to prove that. हमें क्या प्रूव करना है? देख दो प्रॉब्लम में पूरा सभी को डिटेल में समझ में आएगा. 1 upon 4 is less than log of 2 to the base 10. That is to prove that. I am not writing the word to prove that, but it is important. That is to prove that. When the question is asked in theory, you should write that is to prove that. 1 upon 4 is less than 2 log of 2 to the base 10. That is to prove that 1 is less than 4 log 2 to the base 10. Now this 1 is replaced as log of 10 to the base 10. When there is a term in logarithm, both the sides must be in logarithm. So log of 2 raised to 4 to the base 10. Log of 10 to the base 10 is less than. That is to prove that log of 10 to the base 10 is less than log of 2 raised to 4, matlab 16 to the base 10. And observe that log of 10 to the base 10, when base is greater than 1, base is greater than 1 है, base greater than 1 होता है, ये quantity इससे less होगी अगर
ये कंप्लीट क्वांटिटी इससे लेस है क्योंकि ये 10 is less than 16. Yes, 10 is less than 16, so log of 10 to the base 10 is less than log of 16 to the base 10. Therefore, log of 10 to the base 10 is less than log of 2 raised to 4 to the base 10. Therefore, 1 is less than 4 into log of 2 to the base 10. And hence 1 upon 4 is less than log of 2 to the base 10. This is our proof. 2 raised to 4 is 16. ये 4 ऊपर चला गया, ये 4 इधर क्रॉस हुआ, 2 raised to 4 16. That is the left part of this inequality. Now right side of the inequality means what? These are the three parts, 1 2 3 point terms. This is less than this is less than this. A is less than B is less than C. Prove that A is less than B. Proved. Now prove B is less than C. You will get the inequality. Now to prove that log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. ये प्रूव होगा कब? ये होता है log 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. कब? अगर 3 into, अगर ये ऐसा है तो ऐसा है, होना चाहिए. Log of a different तरीका का प्रूफ है. 2 to the base 10 is less than 1. This is this happen only when, देखिए ऊपर जाएगा. Log of, ये सिर्फ फॉर्मेट बदल रहे हैं हम. That is to prove that 2 cube to the base 10 is less than 1. Yes. Without using any value, without finding any value. Log of 2 cube to the base 10 without finding any value from logarithm is less than 1. That is log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. Is less than, that is true. One is what? Log of 10 to the base 10. One is what? Log of 10 to the base 10. One is what? Log of 10 to the base 10. Log of 8 to the base 10 is less than log of 10 to the base 10. Log of 8 to the base 10 is less than log of 10 to the base 10. That is 8 is less than 10. Yes, ये है, इसलिए log of 8 to the base 10 is less than log of 10 to the base 10. इसलिए log of 2 cube to the base 10 is less than 1. इसलिए log of 2 cube to the base 10, ये 2 cube का जो 3 है वो इधर आएगा. 3 log of 2 to the base 10 is less than 1. That is log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. Log of 2 to the, yeah. So we have proved it. First part is proved, second part is proved. Hence, 1 upon 4 is less than log 2 to the base 10 is less than 1 upon 3 is proved. ये है, अगर ये है, अगर ये है तो ये है. ये इसके लिए ये होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए और उसके लिए ये होना चाहिए. ये है, इसलिए सब कुछ है. Next, we have 2 upon 3 upon 10 is, let me take all the problems. So log of 2 to the base 10 is less than 1 upon 3. Similarly, consider one part. We have to prove that. We have to prove that. What you have to prove? We have to prove that 3 upon 10 is less than log of 2 to the base 10. That is to prove that. That is to prove that 3 is less than log of 10 into log of 2 to the base 10. 3 is less than 10 into log of 2 to the base 10. That is to prove that. That is to prove that 3 into 1. 1 matlab log of 10 to the base 10.
ये टर्म ऐसे अंदर आई है अभी। ये 3 into 1 मतलब इज लेस देन, ये तो ऑलरेडी है 10, तो ये है log ऑफ 2 raised to 10 to the base 10। अब चेक करो, ये 3 ऊपर जाएगा तो 1000 और 2 raised to 10, ये चेक करो, आगे के पार्ट आपके लिए है। अब इतनी प्रॉब्लम हो गए है क्या, देखो आगे 10 raised to 3 इज 1000 और ये 10 ऊपर चला गया तो 2 raised to 10, वेदर देयर इज एनी रिलेशन, दिस ऑर्डर रिलेशन का कायम है क्या? Yes, here 3 into log of 10 to the base 10. Let me write it as a log of 10 cube to the base 10. 3 into log of 10 to the base. Log of 10 cube to the base 10 is less than log of, yes, 1024 to the base 10। ये है और ये है, अगर बेस सेम है तो ये नंबर है में वही रिलेशन रहता है, हमने ये प्रूव किया। तो 10 क्यूब इज लेस देन 1024 मतलब 1000। यस, अगर ये है तो ये है बेस 10 है, बेस ग्रेटर देन 1 चाहिए तो ये कायम रहता है ऑर्डर रिलेशन। बेस अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो ऑर्डर रिलेशन कायम नहीं रहेगा, ऑर्डर रिलेशन कायम नहीं रहेगा। ग्रेटर देन 1 है बेस, इसलिए ये चलता है। दिस हैपन ओनली व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। Hence we have the proof of the inequality। कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो हमें चेक करना होता है या हमें इसको वेरीफाई करना होता है। वी हैव टू वेरीफाई वेदर दिस द ऑर्डर रिलेशन इज देयर, या सही ऑर्डर रिलेशन को कैसे पहचाना जाता है ऑर्डर रिलेशन को, तो उसको चेक करने के लिए ये ऑर्डर रिलेशन के लिए ये होते हैं। और बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बट हमने एक प्रॉब्लम एक लेक्चर में डिसकंटिन्यू होता हमारा, log ऑफ x अपॉन b माइनस सी इक्वल्स टू log ऑफ y अपॉन c माइनस a इक्वल्स टू log ऑफ z अपॉन a माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b। शो दैट या हमको पूछा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, व्हाट इज एक्स वाई जेड, ये हमने फाइंड किया था, ये 1 आया था, ये क्वेश्चन हमारा हुआ है। अब हम डिसकंटिन्यू हुए थे उस लेक्चर में, the lecture was discontinued। it was asked what is the value of x raised to a y raised to b z raised to c, what is the value of x raised to a y raised to b z raised to c equals to what is value of x raised to a y raised to b z raised to c, x raised to a y raised to b z raised to c equals to what? X raised to a y raised to b z raised to c, x raised to a y raised to b z raised to c, x raised to a y raised to b z raised to c, x y z equals to what? X raised to a y raised to b z raised to c, x raised to a y raised to b z raised to c, x raised to a y raised to b z raised to c, x raised to a y raised to b z raised to c। ये हमने सॉल्व किया था, we had solved x raised to a y raised to b z raised to c is what, ये हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा। ये पहला 1 है तो दूसरा भी 1 है, या और कुछ है, देखो 1 है। यस, जैसे इसको किया था log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y इंटू लॉग z इक्वल्स टू k का सपोज कीजिए, समझो इसको k समझिए, तो ये जो log x विल बी k इंटू बी माइनस सी। फिर से बताते हैं, अगर हम इसको k कंसिडर करें इक्वल्स टू k तो हर एक टर्म k हो जाएगा,
So log x will be k into b minus c. Log y will be k into c minus a. Log of z equals to k into a minus b. Log x equals to k into b minus c. Log y equals to k into c minus a. Log z equals to k into a minus b. Log x equals to k into b minus c. Log y equals to k into c minus a. Log z equals to k into a minus b. Log x equals to b k into b minus c. Log y equals to k into c minus a. Log z equals to k into a minus b. Log x equals to k into b minus c. Log y equals to k into c minus a. Log z equals to k into a minus b. अगर हमको x रेस टू ए, y रेस टू बी, z रेस टू c का वैल्यू फाइंड करना है तो सीधा सीधा इसमें a मल्टीप्लिकेशन में लाइए ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, x रेस टू a होगा। इसको b से मल्टीप्लाई कीजिए, वो y रेस टू b होगा। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय c, तो ये होगा z रेस टू c। तो अगर इधर a b c मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक को, तो इसमें भी यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा c, टू मेक द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन। अब log ऑफ a log x will be, अभी इसको हम इधर ही बदलते हैं, so it will be what, log of x raised to a, it will be log of y raised to b, it will be log of z raised to c, k into b minus c into a, k into c minus a into b, k into a minus b into c। अब हम इस तीनों को ऐड करेंगे, ऐड, तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेस टू a प्लस log ऑफ y रेस टू b प्लस log ऑफ z रेस टू c। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, के कॉमन लेके और ये वैल्यू जीरो हो जाती है, कैलकुलेशन खुद करना है। तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेस टू a प्लस log ऑफ y रेस टू z प्लस log ऑफ z रेस टू c y रेस टू b इक्वल्स टू दिस। और ये वैल्यू आप देखो, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी, और ये जब सब आप लोग के इंटू करेंगे ऐड, तो ये जीरो हो जाएगा। तो log ऑफ x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c विल बी जीरो। तो हमें क्वांटिटी मिलेगी log ऑफ x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c इक्वल्स टू जीरो। यस, अगर किसी टर्म का log जीरो होता है, बेस की कोई जरूरत नहीं, किसी टर्म का log जीरो होता है तो वह टर्म ऑलवेज वन होती है। इसका मतलब x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c विल बी वन। So x raised to a into y raised to b into z raised to c equals to 1. X raised to a, y raised to b, z raised to c equals to 1. So फिर से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे? ये है सीक्रेट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। जब रेशो इक्वल होते हैं तो कभी भी रेशो इक्वल होते हैं तो रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर को कभी भी आपको भूलना नहीं है। कभी भी दो रेशो हुए या मोर देन टू रेशोज इक्वल है तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का एप्लीकेशन, के मेथड का एप्लीकेशन होता है। इसलिए अपना 9th-10th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो योर log ऑफ x अपॉन b माइनस c, अगेन इट इज से k, फिर से वही बात, तो ये मिलेगा log x इक्वल्स टू k इंटू b माइनस c। अब मैं क्या करता हूँ, अगर हम ये जो हमारे पास टर्म थी log x इक्वल्स टू k इंटू b माइनस c, ये टर्म्स को दोनों साइड से b प्लस c से मल्टीप्लाई करता हूँ, होता क्या है देखिए, b प्लस c इंटू लॉग ऑफ x विल बी k इंटू b प्लस c, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब ये जो है वो जाएगा पावर में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, x रेस टू b प्लस c विल बी k इंटू बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सिमिलरली जैसे इसको b प्लस सी मल्टीप्लाई करके, तो ये टर्म्स को c प्लस ए मल्टीप्लाई करके और इधर a प्लस बी मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा log ऑफ y रेस टू c प्लस ए इक्वल्स टू k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log ऑफ z रेस टू a प्लस बी इक्वल्स टू k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ x रेस टू b प्लस c प्लस log ऑफ y रेस टू c प्लस a प्लस log ऑफ z रेस टू a प्लस b इक्वल्स टू, तो राइट साइड जीरो आएगा।
अब जब किसी का लॉग, अब लॉग ऑफ एक्स रेस टू प्लस 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 तो हो जाएगा लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में आ जाएगा। ओरली बताता हूँ, एक्स रेस टू बी प्लस सी इंटू वाई रेस टू सी प्लस ए इंटू जेड रेस टू ए प्लस बी जीरो। मतलब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, खुद से करना चाहिए, खुद ने करना चाहिए, सॉल्व एज योर ओन। अगर हम इसको लेके गए एडिशन अगर किया तो राइट साइड जीरो आता है। हम आपको बता दें, एक के कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एस, तो ये हो जाएगा जीरो। के इंटू जीरो विल बी जीरो, के इंटू जीरो विल बी जीरो। So log of x raised to b plus c log of y raised to c plus a log of z raised to a plus b will be zero. जब log of log of log of log of x raised to b plus c into y raised to c plus a into z raised to a plus b equals to zero. Log of x raised to b plus c y raised to c plus a z raised to a plus b zero. अगर किसी टर्म का लॉग जीरो है तो मतलब व्हाट डज इट मीन, ये वैल्यू वन है तो एक्स रेस टू बी प्लस सी वाई रेस टू सी प्लस ए जेड रेस टू ए प्लस बी इज वन, सो दिस इज वन। सो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी हमको प्रूव दैट नेक्स्ट वन। सो वी हैव अगेन द नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों ने दिया है आंसर वन। किसी भी जगह वन मत दीजिए आंसर, ट्राई कीजिए वेदर दिस इज पॉसिबल, द वैल्यू इज वन, हो सकती है नहीं। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके पास। अगर सॉल्व क्वेश्चन है तो उसको कैसे डील करना है, सॉल्व ऑलरेडी, तो हर एक स्टेप को देखिए, हर एक स्टेप कैसे है उसके बारे में सोचिए। अब मेरे पास और एक क्वेश्चन है, ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई इज जेड रेस टू सी, सी देयर, ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई एंड सी रेस टू जेड, उल्टा हुआ था। ए का एक्स पावर, बी का वाई पावर और सी का जेड पावर, ए बी सी और एक्स वाई जेड। And at the same time we have b square equals to ac. At the same time we have b square equals to ac. Then prove that what? You have to prove that y equals to 2xz upon x plus z. 2xz upon x plus z. हमें y की वैल्यू 2xz upon x plus z में कन्वर्ट करनी चाहिए। y equals to 2xz upon x plus z. A raised to x, b raised to y, c raised to z, b square is ac. Prove that y equals to 2xz upon x plus z. Prove that y equals to 2xz upon x plus z. Y equals to 2xz upon x plus z. आपको दिया है व्हाट यू हैव गिवन y स्क्वायर b स्क्वायर इज ac, और यही गिवन क्वांटिटी जो होती है वही हमारा सीक्रेट होता है प्रॉब्लम का। b स्क्वायर इज ac, a raised to x, b raised to y, c raised to z, and b square is ac. A raised to x, b raised to y, c raised to z, and b square is ac. A raised to x, b raised to y, c raised to z, and b square is ac. A raised to x, b raised to y, c raised to z, and b square is ac. Prove that y equals to 2xz upon x plus z. Y equals to 2xz upon x plus z. Prove that y equals to 2xz upon x plus z. कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल है। b square is ac will give you the answer. b square will be ac, will give you the answer. पहली स्टेप क्या होगी? What will be our first step? Yes. b raised to y, c raised to z, and b square is ac. Then prove that y equals to 2xz upon x plus z. टाइम पास नहीं है,
हाँ, ये तो बात है। अभी y आने के लिए भी क्या